3-1 है. It's 3-1 which means 3 credits आपके theory के हैं, 1 credit आपका lab का है. कोर्स बुक जो है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है. 6th एडिशन है जो आपने अरेंज करना है एंड इट इज़ बाय सिड्रा स्मिथ. So Sidra Smith, Microelectronic Circuits, 6th edition. रेफरेंस बुक जो है आप यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स 2nd एडिशन. सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 6th एडिशन है बाय स्ट्रीटमैन. इनको आप रेफरेंस बुक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर टूल्स जो डिफरेंट असाइनमेंट्स में आप यूज़ करेंगे वो आपके पास LTSpice है और मैटलैब है, या मैटलैब का फ्री ऑल्टरनेटिव ऑक्टेव भी आप यूज़ कर सकते हैं. So LTSpice is freely available. You can readily download it from their website mentioned here. Octave भी freely available है. अगर आप MATLAB already use कर रहे हैं तो MATLAB is okay too, वो भी आप कर सकते हैं. So these are the two tools that we are going to use in this course. Basic definition से start करते हैं कि electronics को हम define कैसे करते हैं. So electronics is basically defined as science of movement of charges in a vacuum or a semiconductor. जो कंडक्टर्स में मूवमेंट ऑफ चार्जेस है वो आप सेपरेट कोर्स में पढ़ेंगे जिसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स का कोर्स कहते हैं. एंड यू विल सी कि किस तरीके से कंडक्टर्स में से करंट फ्लो करेगा और फ्लक्स जनरेट होगा और उसकी बेसिस पे इलेक्ट्रिक मोटर्स या जनरेटर्स या ट्रांसफार्मर्स बनाए जा सकते हैं. सो इस कोर्स का जो मेन एम है वो है मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन वैक्यूम और सेमीकंडक्टर. स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स में जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस हैं उसको हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में. So from the definition you can see that there are two basic branches of electronics. You have semiconductor electronics and you have vacuum electronics. So our main emphasis in this course is on semiconductor electronics. So semiconductor electronics में जो semiconductor devices 3 हम पढ़ने में interested हैं वो आपके पास है diodes हैं, bipolar junction transistors हैं और field effect transistors हैं. So we have diodes. We'll start with diodes. Diodes से हम start करेंगे. It is the most fundamental, the most easier to understand electronic device. So we'll start with diodes. Then we'll proceed with bipolar junction transistors, also called BJT for short. And then we'll study field effect transistors, FET. Field effect transistors में भी जो specific FET में हम interested होंगे, that is called a MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. So vacuum electronic devices, although हमारा main subject नहीं है यहाँ पर, but still for the sake of completeness, vacuum devices में we have low frequency vacuum tubes, जिसमें आपके पास vacuum diode tubes आ जाती हैं, vacuum triode tubes आ जाती हैं. They have been mostly replaced by semiconductor alternatives because of size and cost benefits. However, at high frequency and high power, still vacuum electronics is the dominant technology. इसमें आपके पास traveling wave tubes हैं जो कि mainly satellites में main transmitters में use होते हैं. Klystrons हैं. Klystrons are used in applications where you require high power but smaller bandwidth. Magnetrons हैं जो कि यूजुअली आपके हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं. जो माइक्रोवेव ओवन है आपके घर में, दैट इज़ बेस्ड ऑन अ मैग्नेट्रॉन. सो मैग्नेट्रॉन इज़ बेसिकली अ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ऑसिलेटर जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वेव्स जनरेट करता है और फूड को हीट अप करता है. 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इज़ एक्चुअली रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. सो बेसिकली मैग्नेट्रॉन बेस्ड जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें आप फूड के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको टारगेट कर रहे होते हैं and you are creating heat by resonating those water molecules. So that's why आपको food का taste थोड़ा different feel होता है from the stove heating, क्योंकि ये mechanism altogether different है. So microwave oven में food usually heats from inside out, और जो stove heating है इसमें usually food heats from outside inwards. Nevertheless, our main emphasis is on semiconductor devices. So semiconductor devices में जिन 3 basic devices में हम interested हैं इस course में, they are the diodes, bipolar junction transistors and field effect transistors. So इन devices को use करने के 2 basic तरीके हैं जिनसे हम typically इनको use करते हैं.
The first one is called the discrete circuit approach. So the semiconductor devices are used singly along with resistors, capacitors and inductors. इसको हम discrete circuit approach कहते हैं. This is the basic approach जो कि आप usually lab में करते हैं. आप अलग से पैकेज resistor लेते हैं, अलग से पैकेज कैपेसिटर लेते हैं, अलग से पैकेज आप डायोड लेंगे या ट्रांजिस्टर लेंगे और उनको ब्रेडबोर्ड के ऊपर वायर्स की मदद से या वैरो बोर्ड के ऊपर या पीसीबी के ऊपर आप इसमें कनेक्ट करेंगे एंड यू विल अचीव सर्टेन सर्किट फंक्शनैलिटी. तो दिस अप्रोच जिसमें आप अलग अलग डिस्क्रीट डिवाइसेस को लेके आप इसमें कनेक्ट करके सर्किट फंक्शनैलिटी अचीव करते हैं इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट सर्किट अप्रोच. दूसरा जो ऑल्टरनेट है वो आपके पास है इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट के केस में आप सारी की सारी सर्किट फंक्शनैलिटी एक ही वेफर के ऊपर, एक ही सेमीकंडक्टर के ऊपर, एक ही गो में अचीव करते हैं. सो यू हैव अ वेफर, अ पीस ऑफ सिलिकॉन जिसके ऊपर आपने मल्टीपल डिवाइसेस फाउंड्री में एक ही गो में क्रिएट की है, उनकी सर्किट आपने आपस में कनेक्टिविटी अचीव की है एंड देन यू हैव a chip. So that is called an integrated circuit approach. For example, आपका जो 741 op amp है, it is comprised of almost 50-51 transistors. कोई 50 transistors से मिलके बनता है. So all these transistors are on the same wafer, on the same piece of silicon, और उनके आपस में कनेक्टिविटी भी अचीव की गई है और वो आपके पास एक रेडी टू यूज सर्किट अवेलेबल है. So that is called integrated circuit approach. यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस एक ही सेमीकंडक्टर के ऊपर, एक ही वेफर के ऊपर आपने इकट्ठी फैब्रिकेट की है और उसके बाद उनकी कनेक्टिविटी भी उसी वेफर के ऊपर अचीव की है. सो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट अप्रोच. सो देयर आर टू फंडामेंटल अप्रोचेस, द डिस्क्रीट सर्किट अप्रोच that you are familiar with, that you use in your labs, and the integrated circuit approach where everything is done in a foundry where all devices are created and connectivity is achieved on a very small piece of silicon. So integrated circuit का advantage क्या है? Integrated circuit का main advantage integration है कि you can achieve a large number of devices on a very small area. So an integrated circuit or IC has multiple electronic devices. By electronic devices I mean diodes or transistors in a very small piece of silicon. Silicon